Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all will be fine. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychist. Today is the subject of psychology is counseling psychology and myself Khadija Mubin. And warmly welcome of all of you in the 8th lecture of this topic counseling based on Gestalt counseling of psychology. There are some contents of this topic. First is what are the pillars of Gestalt therapy? Second, what is an example of Gestalt therapy techniques? Third and fourth is last uses. इन कंटेंट्स की हेल्प से ही मैं गेस्टॉल थेरेपी को एक्सप्लेन करूँगी और जिससे हमें पता चलेगा कि किस लिए यूज़ होती है. फर्स्टली आई डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी बिकॉज इसको जानने से पहले इसके कंटेंट्स पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता लग जाए कि गेस्टाल्ट थेरेपी बेसिकली होती क्या है और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है. गेस्टाल्ट थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी डैट इज़ सेंटर्ड ऑन इंक्रीजिंग अ पर्सन's अवेयरनेस फ्रीडम एंड सेल्फ डायरेक्शन. It is a form of therapy that focuses on the present moment rather than past experiences. गेस्टॉल्ट थेरेपी की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जो बेसिकली जो गेस्टॉल्ट थेरेपी है ये एक साइकोथेरेपी की फॉर्म है. अब इसका मकसद क्या होता है? किसी भी पर्सनस की मतलब कि पर्सन अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना, उसकी फ्रीडम को इंक्रीज़ करना और उसके सेल्फ डायरेक्शन को इंक्रीज़ करना विद द हेल्प ऑफ गेस्टॉल्ट थेरेपी. और ये थेरेपी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि किसी भी पर्सन की प्रेजेंट मोमेंट्स जो होते हैं उन पर फोकस करती है रेदर देन उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के. प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस या उसके प्रेजेंट मोमेंट से मतलब ये है कि जो उसके मौजूदा हालात होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस दी जाती है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. ये नहीं कि उनके पिछले हालात कैसे हैं या वो किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया या जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को नहीं देखा जाता. ज़्यादा जो तरजीह दी जाती है वो उनके प्रेजेंट मोमेंट्स पे दी जाती है जो उनकी रोज़मर्रा डेली लाइफ में मतलब कि जो भी हो रहा होता है, जो भी अपडेट उनकी लाइफ में चल रही होती है उससे रिलेटेड उस चीज़ को फोकस किया जाता है और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशंस को मद्देनज़र रखा जाता है. नाउ फर्स्टली आई डिस्क्राइब द फर्स्ट कंटेंट इज़ व्हाट आर द पिलर्स ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी. There are a number of principal ideas that come into play with Gestalt therapy from perception to self-awareness. अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं गेस्टॉल्ट थेरेपी के, मतलब कि जो उसके मेन प्रिंसिपल हैं जो कि किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस को परसीव करते हुए उस पर काम करती है. The first pillar or first principle is experience influences perception. A therapist trained in Gestalt therapy holds space for their clients to share their truth, not imposing their judgment and accepting the truth of their clients' experiences. गेस्टॉल्ट थेरेपी में जो भी एक थेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट की जो है एक अच्छे से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है और वो अपने क्लाइंट के लिए अपनी सच्चाई बताने के लिए जगह रखता है. अपने फ़ैसले को उन पर मुसल्लत नहीं करता और अपने क्लाइंट्स के तजुर्बात मतलब कि जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी सच्चाई को कबूल करता है. The second principle is the present. The main hallmark of Gestalt therapy is the focus on the present. In this session, the client and therapist rapport is critical in building trust and safety. The present मतलब कि मौजूदा हाल. दी प्रेजेंट से ही इस प्रिंसिपल से पता चल रहा है कि जो भी उनके मौजूदा हाल के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं एक थेरेपिस्ट जो गेस्टॉल थेरेपिस्ट होता है वो उसके ऊपर काम करता है. अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि गेस्टॉल थेरेपी का बुनियादी जो मतलब कि मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि उसके जो भी मौजूदा हालात हैं उन पर तवज्जो दे. सेशंस में क्या होता है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो ताल्लुक़ होता है वो किसकी बेस पे होता है? ट्रस्ट और सेफ्टी की बेस पर जो होता है उनका रिलेशन एक डेवलप होता है जिसकी वजह से जो एक क्लाइंट होता है वो अपने थेरेपिस्ट पर यकीन करता है. The last one is context matters. When in session Gestalt therapists want to learn about the experience of their clients, it is understood that context matters and the therapists use techniques to help the client become more aware of their experiences, their perceptions and their responses to events. कॉन्टेक्स्ट मैटर्स के प्रिंसिपल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सेशंस हो रहा होता है या जब सेशन में होता है एक क्लाइंट तो गेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स के तजुर्बे के बारे में जानना चाहते हैं. ये समझा जाता है कि जो कॉन्टेक्स्ट मेथड के जितने भी मामलात हैं और जो भी उनके
ٹیکنیکس ہیں کس طرح سے ان کو اپلائی کیا جائے کلائنٹ پہ، اور ان ٹیکنیکس کی ہیلپ سے کس طرح سے اس کلائنٹ کی مدد کی جائے، اور جو بھی ان کے بارے میں ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے یا جو بھی ان کا رد عمل ہوتا ہے ان سے زیادہ واقف ہونے میں مدد کرنے کے لیے کچھ مطلب کہ جو اس طرح کے پرنسپلز ہیں ان کی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں۔ What is an example of gestalt therapy? An example of keeping a client present in gestalt therapy might include something like asking the client about their facial expression or body language as they process a particular event or experience. گیسٹرال تھراپی کی مثال یہ ہے کہ کلائنٹ کو موجودہ رکھنے کی مثال میں کچھ شامل ہو سکتا ہے، جیسے کلائنٹ سے ان کے چہرے کے جو بھی ایکسپریشن ہے یا جسمانی زبان کے بارے میں پوچھنا جو وہ کسی خاص واقعہ یا تجربے پر کارروائی کرتے ہیں، اور ان کی کارروائی کرتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہوئے جو وہ کمرے میں دیکھ رہے ہیں، وہ کلائنٹ کو حال میں واپس آنے اور اس پر کارروائی کرنے میں مدد کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ And the second last content of this topic is techniques. Some therapy approaches tend to focus on the therapist as an expert on distress and symptoms. The client has more of a learning role as the therapist shares their knowledge about what they are experiencing and how to heal. اب یہاں پہ کچھ ٹیکنیکس بتائی جا رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھراپی کے طریقوں میں تکلیف اور علامات کے ماہر کے طور پر معالج پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ کلائنٹ کا سیکھنے کا زیادہ کردار ہوتا ہے کیونکہ تھراپسٹ اس بارے میں اپنے علم کا اشتراک کرتا ہے کہ وہ کیا تجربہ کر رہا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ Within Gestalt therapy, the client has space to safely explore their experiences without fear of judgment. In fact, the client is encouraged to not simply talk about their emotions or experiences, but to bring them into the room so they can be processed in real time with the therapist. گیسٹرال تھراپی کے اندر کلائنٹ کے پاس فیصلے کے خوف کے بغیر اپنے تجربات کو محفوظ طریقے سے دریافت کرنے کی جگہ ہے۔ ان فیکٹ کلائنٹ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ محض اپنے جذبات یا تجربات کے بارے میں بات نہ کرے بلکہ انہیں کمرے میں لے آئے تاکہ وہ اپنے جو بھی اس کا تھراپسٹ ہے یا جو بھی اس کا ایکسپرٹ ہے ان کے ساتھ حقیقی وقت میں کارروائی کر سکے، مطلب کہ اس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اس کو پروسیس کر سکے۔ اینڈ دی لاسٹ کنٹینٹ از وٹ گیسٹرال تھراپی کین ہیلپ وتھ، مطلب کہ اس کے یوزز کیا ہیں، ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور کن کن ڈس آرڈرس میں یوز کر سکتے ہیں۔ There are a variety of conditions that Gestalt therapy may be used to treat, including anxiety, depression, low self-efficacy, low self-esteem, relationship problems. ہم ان سب ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے انگزائٹی ڈس آرڈرس میں، ڈپریشن میں، لو سیلف ایفیکیسی میں اور لو سیلف اسٹیم میں اور ریلیشن شپ پرابلمس میں۔ اگر یہ ڈس آرڈر کوئی بھی پرسن سروائیو کر رہا ہے اس ڈس آرڈر میں تو وہ گیسٹرال تھراپی کے تھرو گیسٹرال تھراپی کی ہیلپ سے ان ڈس آرڈرس کو سورٹ آؤٹ کر سکتا ہے، ان ڈس آرڈر سے باہر نکل سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا بھی لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی بہت سی انفارمیشن ویڈیوز کے لیے اور لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔